हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन वेलकम बैक सो आई एम गोना स्टार्ट अ सीरीज जिसमें मैं आपको फीलिंग वर्ड सिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हैप्पी फीलिंग वर्ड से। सो लेट्स स्टार्ट। सो एज यू ऑल नो हम हमेशा अपनी हैप्पी फीलिंग को हैप्पी वर्ड से डिस्क्राइब करते हैं दैट आई एम हैप्पी टू बी हियर, आई एम हैप्पी टू मीट यू, happy anniversary, happy birthday, happy that. So I'm going to tell you few other words so हम happy के अलावा बोल सकते हैं if we want to talk in a more professional way. So let's start. सबसे पहले I'm going to tell you about a word which is my favorite and that is content. Content means being happy and being peaceful. इस छोटे से वर्ड में आपकी पूरी सिचुएशन, आपका पूरा एक्सप्रेशन समा जाता है. If anyone asks you that आपकी वो जॉब आपको कैसा ट्रीट कर रही है, then you can say I'm content with my job. कि मैं अपनी जॉब से बहुत मुतमईन और खुश हूँ. Next we have amused. Amused is a word you can use like she amused the guest with her jokes. उसने खुश किया मेहमानों को अपने जोक से. And I am amused to be here. I am amused after the concert. And there are other words which are delightful, glad, pleased, cheerful, joyful, elated. These all hold the same meaning, so you can always use them. इनका मतलब सबका सेम होता है that you are happy to be here. Plus you can use them in every situation that I am delighted you are here, I am glad you are here, I'm happy you are here, I'm very elated that you are here, I'm amused with your presence and other things like that. I hope you understand it and love it. Apart from these, there are hundreds and hundreds of more words and English happy synonyms which you can use, and I'm going to tell you about few more, such as using I am joyful, I am thrilled to get this news, I am thrilled to have you here, I am blissful, I am overjoyed, I am peaceful, I am joyous, I am jolly, I am happy. And these are such fun words which you can definitely use apart from just using happy. And furthermore, I'm going to tell you few interesting idioms जो आप सिर्फ ये words ना सही बल्कि आप उनको sentences में आप पूरी अपनी बात बोल सकते हैं. They are so fun to use and I'm going to tell you about each one of them one by one, and here we go. So first of all we have to walk on air. हम जब भी अपनी हैप्पीनेस को डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो इफ़ समवन आस्क कि हाउ आर यू फीलिंग, देन यू से आई एम वॉकिंग ऑन एयर. तो उसका मतलब होता है दैट आई एम वेरी हैप्पी अबाउट समथिंग, मैं बहुत खुश हूँ. इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू आई एम ऑन क्लाउड नाइन, जो कि हम उर्दू में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कि आज मैं इतनी खुश हूँ कि मैं सातवें आसमान पे हूँ, आज मैं सातवें आसमान पे हूँ. तो हम बोलते हैं आई एम ऑन क्लाउड नाइन कि मैं बहुत खुश हूँ, बेइंतहा खुश हूँ, मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं है. अदर दैन दैट हमारे पास और भी कुछ ईडियम्स हैं, आई एम गोना टेल यू अबाउट देम. उन सब के मीनिंग्स ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, जैसे कि आई एम थ्रिल्ड टू बिट्स, मैं बहुत खुश हूँ, बेइंतहा खुश हूँ, सेम मीनिंग. आई एम हैप्पी एज लैरी, आई एम हैप्पी एज लैरी, इसका मतलब यही होता है कि बहुत खुश हूँ, बेइंतहा खुश हूँ, आई एम रियली इन गुड मूड. अगर आपसे कोई पूछे हाउ आर यू राइट नाउ, व्हाट आर यू फीलिंग राइट नाउ, एंड यू से आई एम हैप्पी एज लैरी, it's not a name, it's not some other person जो आप कह रहे हैं मैं उस जैसे खुश हूँ, I'm just खुश, I'm just happy. और उसके अलावा one other one I'm going to tell you about, that is you just made my day. अगर आप फॉर एग्जांपल अगर कोई आपको दिन बना दे, जिस तरह माई नीसेस मेक माई डे, मतलब वो मुझे बहुत खुश करती हैं, दे आर लाइक माई हैप्पी प्लेस, तो मैं उनको हमेशा बोलती हूँ ओ माई गॉड यू जस्ट मेड माई डे. तो वो एक तरीका होता है अपना एक्सप्रेस करने का बिहेवियर के, मैं बहुत खुश हूँ विद योर प्रेजेंस, मुझे बहुत अच्छा लगा. सो दैट्स अबाउट इट. वी कवर्ड हैप्पी वर्ड्स, हैप्पी फीलिंग वर्ड्स क्वाइट वेल. हमने मीनिंग सीखा, वर्ड सीखे, और हमने idioms कुछ सीखे और डिफरेंट तरीके सीखे हैं टू एक्सप्रेस our happiness, and I'm sure it will help you. Don't forget to memorize it and remember it. I'll be back with another feeling words, and goodbye.